देखिए, अक्सर ये क्वेश्चन आता रहता है कि भाई हम डायरेक्ट सीडिंग करें या नर्सरी ग्रो करके ट्रांसप्लांट करें। पहली बात तो ये है कि बीज जो महंगा है उसकी हमें नर्सरी ग्रो करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे पास सॉइल या ज़मीन ओपन फील्ड में आ, हम ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते जिसमें बीज टू बीज का फासला, यानी कि बीज से बीज का फासला जो है उसको अच्छे तरीके से मेंटेन कर लें, और सॉइल के अंदर जो है उसका टेम्परेचर मेंटेन कर लें, उसका नमी मेंटेन कर लें, और फिर बीज की जो गहराई है उसको सीड की ज़रूरत के मुताबिक कर लें। यानी कि बारीक सीड जो होगा उसको आपको ऊंचा लगाना पड़ेगा, जो मोटा सीड है उसको थोड़ा गहरा भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी डिफ्रेंशिएट होता है कि वो चौड़े पत्तों वाला बीज है या बारीक पत्तों वाला है। चौड़े पत्तों वाले बीज को नीचे लगाएंगे तो बाहर नहीं निकल सकेगा, बारीक पत्तों वाला निकल आएगा। तो सारी कंडीशंस को देख के हम ये फ़ैसला करते हैं कि भाई कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। डायरेक्ट सीडिंग आसान है, आरामदेह है, प्रोवाइडेड आपके पास मशीनरी इक्विपमेंट हो और आपने ज़मीन को पिकनिक के असूलों के मुताबिक अच्छी तरीके से तैयार किया हो। जब पिकनिक पे ज़मीन तैयार होती है तो उसका एक तो नमी मेंटेन होती है उसमें रेगुलरली, और दूसरा उसमें दर्जा हरारत मेंटेन होता है, सॉइल कवर होता है ऑर्गेनिक मल्च के साथ। तो उसमें एक ऐसी कंडीशन पैदा हो जाती है जिसमें आप सीड को बड़े अच्छे तरीके से जर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशंस ना हों तो फिर आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी चाहिए, फिर आपको नर्सरी ग्रो करके लगानी चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे बीजों की जो महंगे हैं और जो बारीक हैं। जो सस्ते बीज हैं उसको आप ज़्यादा डाल देते हैं। इसी तरीके से है ना कि हमारा जो 3.5 किलो के करीब हमें बीज बड़ी मुश्किल से चाहिए गंदम का, लगाते हम 60 किलो हैं। तो क्यों इतना लगाते हैं? इसलिए कि वो कोई सीड बहुत ही कम सीड जो है जर्मिनेट करते हैं, जो जिनको राइट कंडीशंस मिल जाती है वो जर्मिनेट करते हैं, उगते हैं, बाकी वो ज़ाया हो जाते हैं। तो लेकिन अगर आप प्लांटर के साथ अच्छे तरीके से प्रिसीजन प्लांटर के साथ लगाएंगे तो 3.5 किलो सीड जो है वही आपको 62,000 प्लांट्स आपको दे देगा। तो ये सारी कंडीशंस को मीट करने के लिए हमें देखना है कि हमारी एनवायरनमेंट जो है वो किस तरीके से है, बेड्स का कैसे है, सीड कितना बारीक है, कितना महंगा है, क्या हम सीड ज़्यादा डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। ये आपका डिसीजन है। लेबर कितनी अवेलेबल है, कितनी अवेलेबल नहीं है, लेबर कितनी ट्रेंड है, कितनी ट्रेंड नहीं है, ये सारी चीज़ों का फ़ैसला आपको अपनी साइट के मुताबिक करना चाहिए। यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। अगली स्लाइडों में मैंने इसका एक कंपैरिजन भी बना के दे दिया है कि किस तरीके से जो हम कंपेयर करते हैं ट्रांसप्लांटिंग को डायरेक्ट सीडिंग के साथ, और उसकी भी मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगली स्लाइड पे कर देता हूँ आपको। शुक्रिया। अब इस स्लाइड में मैंने चार्ट बना दिया है जिसमें कंपैरिजन कर दिया है कि ट्रांसप्लांटिंग के क्या फ़ायदे हैं और डायरेक्ट सीडिंग के क्या फ़ायदे या नुकसानात हैं। इन सारी चीज़ों को आप कंपेयर कर लें। मर्सकन जर्मिनेशन कंट्रोल है, यानी कि आप जब नर्सरी ग्रो करते हैं तो एक तो आपकी एनवायरनमेंट जो है वो कंट्रोल्ड होती है, आप उसके ऊपर कोई शेड कर देते हैं, कोई उसका कर लेते हैं, और पानी की भी आप अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर लेते हैं। दर्जा हरारत सॉइल का भी मेंटेन हो जाता है, इसलिए जर्मिनेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है। आउट्स फील्ड में इतने बड़े खेतों के अंदर ये सारी करने पिकनिक के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, पिकनिक के ही ज़रिए आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर जर्मिनेशन जो है उसका आपको बेहतर रेट मिल जाता है, क्रॉप यूनिफॉर्म हो जाती है, और उसके बाद प्रोटेक्शन जो जड़ी अपना कीड़े मकोड़ों से नुकसानात हैं खेत के अंदर वो ज़्यादा होते हैं अगर पिकनिक पे ना हो, कन्वेंशनल तरीके पे हो। लेबर कॉस्ट जो ट्रांसप्लांटिंग की है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा आपको आ जाती है। डायरेक्ट सीडिंग में कॉस्ट कम हो जाती है। और फिर क्लाइमेट कंडीशंस, यानी कि हम नर्सरी क्यों ग्रो करते हैं, मौसमी हालात की वजह से भी करते हैं कि ओके अभी सर्दी है उसको नर्सरी ग्रो कर ली, और जैसे ही मौसम खुला गर्मी शुरू हुई उस वक्त हमने पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया। यानी कि बेसिकली दो रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमारे नर्सरी ग्रो करनी पड़ती है। एक तो क्लाइमेट कंडीशंस हैं, मसलन राइस की क्यों करते हैं कि राइस
जब बारिशें होती हैं तो बारिशों में पानी ज़मीन पे खड़ा हो जाता है, और अगर हम छट्टा दें तो पानी में तो बीज नहीं उगेगा। तो इसलिए पहले बारिश के बगैर, यानी कि जब हमारे पास नहरी निज़ाम और ट्यूबवेल्स नहीं थे, तो उस वक्त तो हम फिर नलके से थोड़ा पानी डाल के आप एक छोटी क्यारी में आप नर्सरी ग्रो कर लेते थे, और जैसे ही बारिश शुरू होती थी आप जाके वहाँ पे जो ट्रांसप्लांट कर लेते थे। तो इसकी ये वजह थी इसकी चावल की ग्रो करने की। और इसके अलावा जो आप को ये देखना है कि आपने माहौल पिकनिक के मुताबिक अगर क्रिएट कर लिया है, और आपके पास प्रिसीजन सीडिंग यूनिट है, प्लांटर है, जो प्रिसाइजली आपके ब्रीक सीड को भी और मोटे सीड को भी आपकी मॉइस्ट कंडीशन में लगा दे, तो डायरेक्ट सीडिंग सस्ती है, आसान है, उसमें पौधा जो है वो ट्रॉमे में नहीं जाता, जल्दी ग्रो करता है। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन ना हो तो फिर ट्रांसप्लांटिंग वो बेहतर है। शुक्रिया। Optimizing seed germination, transplanting versus direct seeding. A seed is a dormant embryo that requires an ideal environment to germinate and grow into a plant like a child, which develops in a womb, where ideal conditions are assured. Most conditions in the open field are not suitable for germination and growth. If the environment is not right, such as temperature being too low or too high, or if the seed is not placed at the correct depth, germination may fail. Proper temperature conditions, whether cold or warm, are essential. Additionally, the seed must be placed at the proper depth where soil has retained moisture to provide sufficient nutrients for the seedling's development. This is a stage where the seed uses the energy attached to it and strives to establish a supply source from soil to be able to reach out of the soil to start the photosynthesis process, the major source of supply. When seed placement is done correctly, it creates an environment where moisture is maintained, temperature remains moderate, and there is no excessive radiation. If a proper planter is used, it can be adjusted to place the seed according to its size and species, such as broad or narrow leaves, resulting in a germination rate of approximately 80 to 90%. At present, we mitigate field deficiencies with excessive use of seed, such as wheat requires a maximum of 3.5 kilograms, 62,000, of seed, whereas normally farmers plant 60 kilograms on average. Further, there are challenges in seed germination. Many seeds have a naturally low germination potential, due to inadequate maturity or bad handling during harvest and seed separation in the poor storage conditions. We often lack the proper machinery to plant seeds at the correct depth and spacing, especially when dealing with small seeds. This is one of the reasons why we prefer growing seedlings in nurseries and then transplanting them. We have also provided a comparison between transplanting and direct seeding. This comparison should be considered whenever choosing between transplantation or direct seeding, as it influences the success and efficiency of the crop establishment. Comparison table highlighting the reasons why some farmers prefer transplanting seedlings over direct seeding. Aspect: transplanting seedlings, direct seeding. Germination control. Better control: seedlings are started in controlled environments. Less control: seeds are sown directly in the field. Germination rate. Higher, as seedlings are grown under optimal conditions. Variable, affected by soil conditions, pests, and weather. Growth rate. Faster initial growth since seedlings are already established, slower, plants start from seed and need time to establish. Crop uniformity. More uniform due to uniform seedling development. Less uniform, germination can be uneven. Protection from pests/disease. Young seedlings can be protected in nurseries before transplanting. Vulnerable to pests and diseases immediately after sowing. Labor and cost. Higher initial labor and cost for raising seedlings in nurseries, lower initial cost, fewer steps involved. Suitability for crops. Ideal for crops sensitive to seedling damage or slow germination, suitable for hardy crops with good direct seed germination. Climate and soil conditions. Can be grown in controlled environments, suitable for adverse conditions, requires suitable field conditions for germination. Timing and flexibility, allows for better planning,
Seedlings can be transplanted when ready, sown directly when conditions are optimal.